Assalamualaikum and welcome to lecture number 25 for the course Corporate Social Responsibility MGT610. We're continuing chapter number 6, whereby we're discussing the different frameworks for rating corporate social responsibility initiatives that are taken up by various corporations, enterprises and businesses. The learning objectives for this particular chapter is to understand the importance of CSR reporting, to create awareness about the various reporting criteria followed to report CSR, to understand how conscientious organizations are committed to the concept of CSR, and to learn from CSR reporting frameworks of various agencies and organizations. What we've done so far with respect to the last lecture is we were discussing as what are the various different reporting frameworks that various organizations or agencies make. While we were discussing that the very first thing that we talked about was the GRI initiative. Then we talked about the specialized security indexes, जहाँ पर हमने Dow Jones Water Index की बात की थी या FTSE for Good Index की बात की थी. Then we talked about the various stock exchanges जो कि इस purpose के लिए बनती हैं, और the various regulations, government regulations जो इस reference से बनती हैं. Then we talked about कि जी there are certain agencies and organizations which are also committed to sustainability. They are committed towards sustainable growth and they're committed to corporate social responsibility. And they're the ones जो कि corporate social responsibility initiatives को rank भी करती हैं. And then they also make their information, their reports available for everyone to see, so that लोग उसको एज बेंचमार्किंग यूज़ कर सकें, लोग उसको एज गाइडलाइंस यूज़ कर सकें. उसमें हमने सबसे पहली जो चीज़ पढ़ी थी दैट वाज अबाउट BITC. हमने BITC के स्ट्रक्चर को डिटेल में स्टडी किया था. हमने स्टडी किया था कि जी व्हाट इज़ BITC ऑल अबाउट, व्हाई इज़ इट डूइंग व्हाट इट इज़ डूइंग नाउ. एंड देन वी ऑल्सो डिस्कस कि जी उसकी कौन सी वेरियस डिफरेंट गाइडलाइंस हैं. And I also took you to the BITC website, and हमने उस website के reference से भी हमने in detail website को study किया, so that we get an idea कि BITC का objectives क्या हैं, उसके stakeholders क्या हैं, उसको क्यों follow किया जाए, क्यों नहीं follow किया जाए, and that was all on the website. Now today we're going to start our lecture with the discussion of a CR index. Now remember, when we were talking about BITC, we also said that BITC said that the term corporate social responsibility is not a very complete term, for the very simple reason that corporate social responsibility, the term itself, only deals with those initiatives which has a social impact on the society, or it just deals with those initiatives जो कि society के reference से होते हैं. And the term corporate social responsibility does not encompass in itself the concept of environment. So what BITC said was that instead of calling it corporate social responsibility, we should call it corporate responsibility. Then later on, corporate responsibility के साथ issues ये आए कि a lot of people took the abbreviation of corporate responsibility CR as an abbreviation for corporate governance. तो फिर BITC ने the concept of responsible business लेकर आए, and then we discussed what responsible business is. हमने उसकी definition, उसमें क्या चीज़ें included हैं, क्या चीज़ें included नहीं हैं, ये सब कुछ हमने last lecture में किया था. Now today we're going to talk about the corporate responsibility index that was developed by BITC. Now developed in consultation with businesses, the CR index, that's corporate responsibility index, challenges and support large organizations to integrate responsible business practices. Now responsible business practices क्या है, ये हम last lecture में आपको exactly बता चुके हैं कि when I say responsible business, what exactly do I mean by that. So the CR index is basically all about, it does two things. One, it supports the corporate responsible initiatives taken up by corporations, and two, it motivates the corporations to meet the challenges, or it motivates the organization to integrate corporate responsibility into their business practices. Now the approach for this particular index is it takes the form of an online survey, and companies follow a self-assessment process intended to help them identify both the strengths in their management and performance and gaps. So basically the CR index is basically an online form. It's an online survey which the companies do their own assessment and see कि जी वो किस तरीके से perform कर रहे हैं with respect to corporate responsibility, and they fill that up. Now while they're filling the survey form up, what happens is that one, they can
easily identify the strengths in their management process, and two, they can also find the gaps between the standards that they have set for themselves and their actual performance. So through this survey उनको अपनी strengths के बारे में भी पता चल रहा है, उनको अपनी performance के बारे में भी पता चल रहा है, और उनको अपने gaps के बारे में भी पता चल रहा है. Automatically strengths are good for the company, performance has to be good, और gaps जो होते हैं उनकी identification इसलिए ज़रूरी होती है कि because once you identify the gaps, only then you are able to remove the gaps and remove the deficiencies in your system. Business and the community, that's BITC, believes that self-assessment is the starting point for action and improvement, but it independently validates submission to ensure reliability and consistency. So what BITC does is, with respect to CR index, that it, since BITC is very strongly believe कि जी, especially with reference to implementing corporate responsibility initiatives, self-assessment is extremely important, because once the organization realize it themselves जी कि हम को corporate responsibility initiatives undertake करने हैं, only then the company is going to be corporately responsible. So with this thing in mind, आपकी self assessment is जो CR index है, इस पे self assessment होती है. Now having said that, जो कंपनीज ये सर्वे फॉर्म्स फिल करती हैं, ज़रूरी नहीं कि जो वो इन्फॉर्मेशन डालें उसको एज सच बिल्कुल वैसा का वैसे ही पब्लिश कर दिया जाए. द इंफॉर्मेशन दैट द कंपनीज प्रोवाइड टू BITC and the information that the companies fill in with respect to these forms are also independently validated and to ensure कि जी वो reliable है या consistent है. So ये नहीं होता है कि जी जो organization ने इस survey में डाल दिया, जो organization ने online form fill कर दिया, वो form या वो information वैसे की वैसे ही आगे चली जाएगी और print हो जाएगी. BITC what they do is कि वो independently आपकी source of information को, आपकी specific information को वैलिडेट करते हैं, चेक करते हैं टू सी कि क्या इंफॉर्मेशन रिलायबल है और कंसिस्टेंट है. Now the CR index supports companies to identify gaps for improvement and reinforce good practices. Again, the purpose is that the business practices should be responsible practices. So what it does is it sort of sees कि जी कहाँ कौन से areas में, कौन से functional areas में, कौन से processes में, कौन से operations में gaps हैं, so that those gaps can be removed. Track progress over time and drive continuous improvement. So that's another thing that the CR index helps in companies to do. It tracks the process, it tracks the performance of the company over time with respect to responsible practices. और जब आपकी performance over time आपके पास आ जाती है, तो automatically आप comparison भी उससे कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि over time आपके organization में किस किस्म की continuous improvements हुई हैं. Benchmark performance against peers and leading practice. Again, when a large number of companies are going to follow the same guidelines, are going to follow the same practices जो कि CR index में है, तो automatically बहुत सारी across companies आप पे common grounds develop हो जाएंगे. And when common grounds develop, then automatically comparison becomes very easy. So again, आपका CR index supports companies की benchmarking को support करता है, and आप leading practices को copy करके अपनी organization में incorporate कर सकते हैं. The CR index supports companies to engage board members and raise awareness of CR issues internally. Again, whenever you're submitting information in the CR index, companies cannot just do it themselves. If I'm working for a company, I just can't submit information for the CR index. The information that has to be submitted in the CR index has to be validated and confirmed by the board of directors. Now when that happens, automatically every board of director, once they say yes to that information, that means they are also involved in responsible business. And automatically जब आप चीज़ों को, अपनी organization को इतने closely study करेंगे, तो आपकी board members की awareness भी ज़्यादा होगी और आप CR issues को internally देख सकेंगे. And again, remember that seeing is believing. Unless and until you don't actually see a problem, unless and until you don't actually see as to how your business is impacting the society, आपको वो awareness आ ही नहीं सकती. Because जब detached होते हैं आप चीज़ों से, तो automatically आपकी sensitivity भी
उतनी ज़्यादा चीज़ों के बारे में नहीं होती है. So when they see these survey forms, when the board members see these filled up forms, तो automatically they do realize कि company के action से environment पर, society पर क्या असर पड़ रहा है, and automatically each member would try to do their utmost कि उनके ऐसे actions हो जो positively society को influence कर सके. Now companies can choose to use the tool, the CR index tool, on either a public or a private basis. Now what do I mean when I say public basis or private basis? Public participants are included in the annual CR index ranking and demonstrate a commitment to transparently improving their social and environmental performance. So whoever uses the index as a public on a public basis, automatically all the information provided by that particular company will be included in the annual CR index ranking, and that information will be made available for everybody to see. On the other hand, companies also have an option that if they do not want to make their information public, तो उनके पास ये option भी होता है कि वो information को पब्लिक ना करें. उस केस में आप इस पर्टिकुलर CR इंडेक्स को प्राइवेट यूज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. Now what do I mean by private participation? Private participation is designed for companies not ready to disclose their performance and focuses on providing guidance and feedback, help organizations better integrate and improve their CR performance. So if companies do not want to make their CR information public, so the CR index can be used for private uses as well. And in that case, the information that is provided for the CR index is basically used to see कि जी आपकी overtime performance क्या है, and you just focusing on the guidelines and you're focusing कि जी आपको आपकी feedback क्या आती है, so that your organization can better integrate the corporate responsibility into the business activities and improve their corporate responsibility performance in the entire organization. Now whenever we're talking about the CR index, the CR index follows a systematic approach to managing, measuring and reporting on business responsible business practices. Companies are assessing uses the framework below. So whenever the CR index is used, तो companies की performance या companies के operations या company के processes जो rate होते हैं या assessed होते हैं, that is by using this particular framework. Now this particular framework can be explained to you through this particular picture as well. Corporate strategy, integration, management areas जिसमें community, environment, marketplace और workplace की बात करेंगे, and then finally performance and impact areas जहाँ पर environmental performance और social performance की बात होती है. So that is the framework that is used to see the CR performance of companies who used CR index. Now when I say corporate strategy, that means it looks at the main corporate responsibility risks and opportunities to the business and how these are being identified and then addressed through strategy, policies and responsibility held at a senior level in the company. So whenever you're looking to see KG what is the CR performance of a company, the very first thing that you see or the very first thing that you look is the corporate strategy of that particular company, and you see KG with reference to corporate strategy, what are the risks that the company is facing, what are the opportunities that can be benefited by the company, and then you see KG आप risk or opportunities को कैसे identify करते हैं, and then how are you mitigating the risk and how are you taking advantage of the opportunities through strategy, through policies and through responsibility or through management. So basically it's all about कि जी आपने risk और opportunities को किस तरीके से identify किया, risk और opportunities को किस तरीके से manage किया या address किया, और इन दोनों चीज़ों को manage और address और identify करने के लिए आपकी strategy, आपकी policies और आपकी senior management responsibilities जो है वो बहुत ज़्यादा important है. Second thing is integration. Integration is about how companies organize, manage and embed corporate responsibility into their operations through KPIs, performance management, effective stakeholder engagement and reporting. So the very first thing that the company, whenever you're using the CR index, the very first thing that happens is that the very first thing that you need to identify is how do we identify and address our risk and opportunities by using strategies, by using policies and by using senior level management. Now once you've identified risk opportunities and you've seen the strategy, policies and the top management responsibilities, then the second thing is कि आपको integrate
इंटीग्रेट करना है अपनी स्ट्रैटेजी में, अपनी पॉलिसीज में, अपने ऑर्गेनाइजेशन टेक्निक्स में, अपने मैनेजमेंट टेक्निक्स में आपने कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी को एम्बेड करना है इनटू एवरीथिंग दैट द ऑर्गेनाइजेशन डज. समथिंग I guess a similar thing that we've discussed in the past as well when we talked about values and when we talked about functional areas and when we talked about remember when we were talking about flow charts, उसमें भी हमने यही बात की थी कि जी आपके चाहे आपके operational flow charts हो या आपके process flow charts हो, you need to identify every activity and then you need to incorporate corporate social responsibility into every activity so that it is automatically woven into the fabric of your organization. So integration is all about कि आपकी companies is about how the companies organize, manage and embed corporate social responsibility. पहले corporate social responsibility को कैसे organize करते हैं उसके initiatives को कैसे manage करते हैं and then फाइनली आप उसको कैसे वीव करते हैं इनटू द ऑर्गेनाइजेशंस ऑपरेशंस थ्रू की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, इनटू परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, इनटू इफेक्टिव स्टेक होल्डर्स एंगेजमेंट एंड इनटू रिपोर्टिंग एज वेल. सो बेसिकली थ्रू इंटीग्रेशन you want to integrate your corporate responsibility initiatives with everything that the organization is doing. The third way or the third area which is used to assess the corporate responsibility of an organization is management. Management builds on the integration section, looking at how companies are managing their risk and opportunities in the areas of community, environment, marketplace and workplaces. So with reference to these four areas, workplace, marketplace, environment and community, the management integrates या देखती है कि किस तरीके से आपका इंटीग्रेशन जो आपने सब चीज़ों की CSR से की है, सब ऑपरेशंस की CSR से की है, विद रेफरेंस टू इंटीग्रेशन, विद रेफरेंस टू CSR बीइंग इंटीग्रेटेड इनटू एवरी एस्पेक्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, आप रिस्क्स को और आप अपॉर्चुनिटीज़ को कैसे रिजॉल्व करते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे देखते हैं, स्पेशली इन द एरियाज ऑफ कम्युनिटी, इन द एरियाज ऑफ एनवायरनमेंट, इन द एरियाज ऑफ मार्केट प्लेसेस एंड वर्क प्लेसेस. सो व्हेन आई से कि जी social responsibility or rather corporate responsibility is not does not only have an external view or is not only related to the external environment of the organization, it is also related to the internal environment of the organization, because जब आप workplace की बात करते हैं, that is all about कि how are you treating your employees, उनके appraisals, उनकी compensation, उनकी work life कैसी है. So that is what management is. And finally, performance and impact. Ask companies to report performance in a range of social and environmental impact areas. Participants complete 3 environmental and 3 social areas based on the relevance of their business. So finally, आप performance और impact में basically ये देखते हैं कि जी different impact areas इस CR index से identify कर दिए हैं, and you ask participants to rate their activities with respect to those impact areas. Now, impact areas are 3 for the environmental areas, and there are 3 impact areas with reference to the society as well. So आप environmental impact भी judge करते हैं और आप societal impact भी judge करते हैं of the organizational activities. So basically, अगर हम CR index की बात करें with reference to this picture as well, a company, whenever they're filling up that online form, whenever they're filling up that online survey, a company does a self-assessment of itself on all of these areas. It sees कि उसकी corporate strategy कैसी है, उसकी mission, vision, values कैसी हैं, क्या उसकी risk और opportunities किस तरीके से identify हो रहे हैं, किस तरीके से address हो रहे हैं with reference to strategy, with reference to policy, and also with reference to top management responsibilities. So a company is going to assess itself on this particular criteria. Now once that is done, the second thing that happens is integration. The company really needs to see कि आप अपनी चीज़ों को, आप अपने प्रोसेसेस को, आप अपनी एक्टिविटीज़ को, इन ऑपरेशंस को किस तरीके से इंटेग्रेट कर रहे हैं विद कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी. जो गाइडलाइंस, जो फ्रेमवर्क्स कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी के हैं, जो कॉन्सेप्ट्स कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी के हैं, क्या आप उनको इंटेग्रेट कर रहे हैं अपने की एरियाज के साथ, अपने की फंक्शनल एरियाज के साथ या नहीं. Now that's the second thing on which assessment is done by the companies. The third thing is कि आपने आइडेंटिफाई भी कर लिया, आपने इंटीग्रेट भी कर लिया, देन यू रियली सी कि जी किस तरीके से आपने जो इंटीग्रेशन की है वो आपने किस रेफरेंस से जो आपने काम सेकंड स्टेप में किया है, आप
ऑटोमेटिकली इसको अप्लाई कर देते हो कम्युनिटी इन्वायरमेंट, मार्केट प्लेसेस और वर्क प्लेसेस में, कि इन चारों एरियाज के अंदर आप रिस्क किस तरह आइडेंटिफाई करते हो, आप अपॉर्चुनिटीज किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हो, और आप बेसिकली किस तरीके से अपने रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करते हो, वेयर बाय यू हैव इंटीग्रेटेड योर सोशल और कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन योर स्ट्रैटेजीज, policies and responsibilities. Now once this is done, then you come back to performance analysis and you exactly ask companies to rate their activities in terms of environmental impact and social impacts to see कि जी companies की activities ने environmentally कितना फ़ायदा या नुकसान पहुँचाया और socially कितना फ़ायदा या नुकसान पहुँचाया. So that is what your CR index is, and that is how आप अपने CR इंडेक्स की को देखते हैं. और कंपनीज जो है इस पूरे इंडेक्स को जब भी यूज करती हैं, दे लुक इंटरनली एट देमसेल्व्स एंड दे सी कि जी किस तरीके से इंडेक्स को यूज करना है. वो सेल्फ असेस करती हैं, एंड देन वंस द इंफॉर्मेशन ऑन ऑल दीज 4 एरियाज इज सबमिटेड टू BITC, देन BITC ऑटोमेटिकली और इंडिपेंडेंटली वैलिडेट्स द इंफॉर्मेशन टू सी कि जी उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है और उसकी रिलायबिलिटी क्या है. सो दैट इज व्हाट द CR index is about. Now the index supports companies to integrate responsible business by helping them do the following. So जो index का primary purpose है, that is basically supporting companies so that they can integrate responsible business practices, अपनी business practices को responsible business practices बना दें, and it helps them to find gap analysis, helping the organizations to identify both the strengths in their management and the gaps where future progress can be made. So जब आप CR index को use कर लेंगे, you'll exactly know what you're doing right now. आपको अपनी current performance के बारे में पता चल जाएगा, and then you would also know कि जी what do you have to do in the future or what is the future of corporate responsible business. And then जब आपको gaps पता चल जाएंगे तो automatically आपको you'll have to find ways and means to reduce those gaps or get over those gaps. Next is benchmarking. Benchmarking performance against sector peers and leading practices from across the CR index, because the CR index is going to have a large number of companies जो कि CR index के अंदर include होंगी. So automatically you will say कि which is the company which has the best which is the best in terms of responsible business. And then once you have identified the best, then you would automatically say कि जी how has that company become the best, उसकी क्या strategies हैं, क्या policies हैं, क्या activities हैं, क्या processes हैं, क्या operations हैं. And then automatically once you've identified the best and once you've studied the business practices or the responsible business practices of the best company, then it automatically would become easier for your company to adopt those things in your organization and automatically also start being responsible towards business. Then the CR index also supports or also helps in tracking progress. That's reinforcing good practices and driving continuous improvement, because CR index आप एक दफ़ा नहीं use करेंगे. आपकी company is going to use the CR index for a long period of time, and when you're going to use the same index over and over again, it will help you track your progress, because आपके standards same होंगे, आपकी guidelines सही होंगी. आप हर साल उन्हीं standards और उन्हीं guidelines को use करते हुए अपनी performance के बारे में assessment forms fill करेंगे. And then once you're going to see the conclusion of the results of those assessment forms, it is going to become very easy for your company to track the progress. And the CR index provides a powerful way to engage board members and raise awareness of material corporate responsibility issues. So again, जब आपका board member किसी चीज़ को yes करेगा, किसी चीज़ को approve करेगा, तो automatically उसकी ownership भी उस particular चीज़ के बारे में ज़्यादा हो जाएगी, as compared to कि अगर organization का कोई और part, let's say कोई और level इस CR index को fill कर रहा होता और आगे submit कर रहा होता, तो क्या होता कि people who are actually making the strategy or people who are actually making the policies, which are the board members, उनकी involvement उस survey में नहीं होती. But when the survey is filled and it seeks the approval of the board members before it gets submitted to the CR index, और जब board members खुद approve करते हैं and they say yes कि अच्छा this document is right and this is what we are doing and this is what is happening in the organization, तो automatically awareness भी ज़्यादा हो जाती है, because they would see कि अच्छा this is what we are doing but we are capable of doing so much more, so why are we not doing so much more. So अगली दफ़ा जो strategy बनेगी, जो policy बनेगी, वो शायद बेहतर बने.
Second thing is ownership बहुत ज़्यादा हो जाती है when you're signing a piece of paper or when you're validating a piece of paper or when you're approving a piece of paper, then that means that your board is also taking responsibility कि हमारी organization ये सारे काम कर रही है, and then automatically the chances of wrong reporting or the chances of giving false information would automatically reduce, because आज के ज़माने में with the role that media has to play today, with the role that government and regulation agencies are playing today, it becomes extremely difficult for corporations कि वो गलत information जो है वो quote करें या गलत information जो है वो दें. So automatically जब आप CR index को use करेंगे, so it is a very powerful way to engage board members and raise awareness of material corporate responsibility issues. Now before I go and I tell you about the other initiatives or the other organizations, let's just do this. This is the Corporate Responsibility Index. Again, वेबसाइट हम गए हैं और BITC की ही वेबसाइट्स पर अगर आप आगे जाएंगे तो आपको Corporate Responsibility Index मिल जाएगा, या just write CR Index on the Google bar and you will be able to get on this particular web page. Now the very first thing that you will see is that the deadline for all 2013 CR Index submission is now closed. That means कि हर company sees a deadline और within the deadline जो है companies अपनी CR Index submissions देती हैं. Let's just सी के इसमें क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या चीज़ें नहीं हैं. दिस इज समथिंग दैट वी हैव डन एज वेल. It takes the form of an online survey, and companies follow a self-assessment process intended to help them identify both the strengths in their management and performance and gaps. ये सारी चीज़ें मैं आपको already बता चुकी हूँ. Now we're just going to explore the website together so that you know what this is and और किस तरीके से होती है. Again, आपका पूरा framework ये है और it basically looks at these 4 different things, and आपकी company जो है वो जो self-assessment करती है, that is with reference to these 4 things, और इनके रेफरेंस से वो अपनी सेल्फ असेसमेंट करके देसी कि जी उनका बिजनेस जो है वो रिस्पॉन्सिबल बिजनेस है या नहीं है, या वो कौन कौन से रिस्पॉन्सिबल बिजनेस के इनिशिएटिव्स को फुलफिल कर रहे हैं. द नेक्स्ट थिंग इज कि जी अगेन आपका बेनिफिट्स क्या हैं, गैप एनालिसिस फाइंड करता है, बेंचमार्किंग करता है और ट्रैक प्रोग्रेस करता है. इन एडिशन, कंपनीज हु पार्टिसिपेट पब्लिकली मेकिंग अप द एनुअल CR इंडेक्स रेटिंग और रैंकिंग डेमोन्स्ट्रेट अ कमिटमेंट टू ट्रांसपेरेंटली इंप्रूविंग देयर सोशल एंड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स एंड फर्दर बेनिफिट फ्रॉम. अब ये सारे बेनिफिट्स वो बेनिफिट्स हैं जो सब कंपनीज को मिलते हैं, चाहे वो अपनी इंफॉर्मेशन को पब्लिक करें या अपनी इंफॉर्मेशन को पब्लिक ना करें. बट ऑन द अदर हैंड, द कंपनीज विच आर मेकिंग देयर बिजनेस प्रैक्टिसेस ट्रांसपेरेंट, विच आर मेकिंग देयर इनिशिएटिव्स ट्रांसपेरेंट बाय publicizing and by using the CR index tool as from the public perspective, उनको added benefits मिलते हैं. Now what are those benefits? Profile and recognition from being included in the CR index ranking, which has most recently been published in the Financial Times on 15th March 2012. So that means that those companies who are making their CR initiatives public, who are ensuring कि वो CR index को use करते हैं और फिर जो information CR index में डालते हैं वो public के लिए readily available हो through the annual CR index ranking, उनको publicity भी ज़्यादा मिलती है, उनकी recognition भी ज़्यादा होती है, because this index, the CR index, is not published in any magazine. It is published in the Financial Times. That's one of the biggest. उसकी जो readers हैं वो बहुत सारे होंगे, उसकी जो circulation है वो बहुत wide circulated magazine है. So automatically when I would open up a Financial Times and read about a company के जी and read about the CR index के जी ये company है, उसकी rating ये है, then automatically उस company को publicity भी ज़्यादा मिलेगी, promotion भी ज़्यादा होगी और वो recognized भी ज़्यादा होगी as compared to that company जो कि अपनी rating को पब्लिक नहीं करती. The second thing is that case studies and research on top performing companies and highlighting emerging trends and identifying pockets of excellence. So सब automatically आपको recognition मिलेगी, आपकी प्रोफाइल बेहतर होगी, आपको प्रमोशन मिलेगी, आपकी कंपनी की पब्लिसिटी होगी.
तो ऑटोमेटिकली आपकी कंपनी के बारे में केस स्टडीज भी बनेंगी विच विल बी मेड अवेलेबल फॉर एवरीबडी टू सी एंड एवरीबडी टू रीड, और आपके उसके और बहुत से पॉजिटिव इफेक्ट्स जो हैं वो आपकी कंपनी को मिलेंगे. अगेन आई वुड एंड माई एक्सप्लोरेशन ऑफ दिस वेबसाइट हेयर, बट आई वुड रियली वांट कि आप इस पर्टिकुलर वेबसाइट को एक्सप्लोर भी करें, आप इस पर्टिकुलर वेबसाइट को देखें भी, एंड देन गो थ्रू ईच एंड एवरीथिंग, सी के जी रिजल्ट्स एंड रैंकिंग्स क्या हैं. आई वुड वांट यू टू सी कि किस तरीके से सेक्टर एनालिसिस होता है और किस तरीके से व्हाट दे आर वर्किंग एंड व्हाट दे आर डूइंग एंड हाउ आर दे बेनिफिटिंग फ्रॉम थिंग्स लाइक दिस. सी ऑल्सो कि जी आप इसमें पार्टिसिपेशन कैसे कर सकते हैं, पब्लिक पार्टिसिपेशन क्या है, प्राइवेट पार्टिसिपेशन क्या है, आपकी जो सपोर्टेड सबमिशंस हैं, प्राइवेट गोइंग पब्लिक है. रीड ऑल दिस, एक्सप्लोर दिस एंटायर वेबसाइट, बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम्स the assignments that I'm going to give you, a lot of time the quizzes that I might give you would also involve information or data that I would get from these websites. So please don't limit yourself कि अगर मैं आपको websites during the lecture दिखा रही हूँ, that's just कि मैं और आप एक पेज पर हों कि what kind of information I want you to see. I'm exploring the websites with you, but because of lack of time, I can't go into every heading on every page to discuss with you कि क्या चीज़ें हैं, क्या चीज़ें. These are very simple websites, very easy English. आपको कोई communication के issues नहीं होने चाहिए, but these are very relevant websites with reference to our course, with reference to what we're studying in corporate social responsibility. So I would really want you to go to all. चाहे हमने GRI की वेबसाइट भी देखी है, हमने BITC की वेबसाइट भी देखी है, हमने CR इंडेक्स की वेबसाइट की भी देखी, और बिल्कुल शुरू के लेक्चर्स में हमने यूनिलीवर की वेबसाइट भी देखी थी. एंड मे बी लेटर ऑन चैप्टर में आपको नेस्ले की वेबसाइट या आपको टाटा की वेबसाइट या आपको IBM या माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट्स भी दिखाऊंगी. But again, the point is that you, when you're free, when you don't have anything to do, maybe you could just put earphones, listen to some sort of music and just go through these websites and see कि जी websites के अंदर material क्या है, and then आपको ज़्यादा एक तो interest भी ज़्यादा develop होगा in the concepts that we are studying, and then you would be able to relate what you studied in this course with क्या आपकी अपनी awareness भी ज़्यादा होगी, and especially as future managers and especially as future entrepreneurs जब आप इन सब चीज़ों को देखेंगे तो आपका एक corporate social responsibility में interest भी develop होगा, and then you will also realize that so many other people, so many other companies, so many big companies are taking up these initiatives very seriously. और with reference to the Pakistani environment, अगर आपकी कंपनी या अगर आप इन initiatives को नहीं कर रहे, so you're losing big time. आपको इन इनिशिएटिव्स को सीरियसली लेना है, सीरियसली समझना और एनालाइज करना है, एंड देन मोर इम्पोर्टेंटली सीरियसली इम्प्लीमेंट एंड रिपोर्ट करना है, सो दैट you keep all your stakeholders satisfied. Now the next agency or organization that we're going to talk about, which again does sustainability reporting या corporate social responsibility या corporate responsibility के बारे में reporting करती है, that is Experts in Responsible Investment Solutions or EIRIA. I'm not going to go to their website, but then again आप please इनकी website को देखिएगा, because what you will feel if you're reading your books again with me is that the information that is there on the slides might not be there in your book. आपकी book की जो information है वो भी बहुत important है, लेकिन the information at times that you are seeing on the slides is the ones that I've taken from the websites of these particular organizations and companies. So आपको वहाँ पर discrepancy नजर आ सकती है. From the papers perspective, please also note कि जो आपकी book में है, it's as much important as what I'm showing you on the slides. So हम दोनों की amalgamation के साथ ही चलेंगे और साथ ही काम करेंगे. Now the experts in responsible investment solution, let's read what they do. EIRIS is a global leader in the provision of environmental social governance, that's ESG, हम इस term को आगे भी use करेंगे, environmental social governance, governance research for responsible investors. So what basically this institute is doing is it's basically giving investors the information about the environmental social governance कि companies की environmental impacts क्या हैं, social impacts क्या हैं और उनकी governance कैसी है. Now why is this information being given to people? This information is given to people from investment purposes. Today if I have money,
I would like to spend in a company, I would like to invest in a company which is socially responsible. I would like to invest in a company जिसके social actions, environmental actions और governance ऐसी है which is not harming any individuals, जो कि which is doing good for the society, which is doing welfare for communities. It is an independent, not-for-profit organizations, and it works to help clients develop the market in ways that benefit investors, asset managers, and the wider world. So the purpose is basically कि जी आप investment purposes के लिए भी information use कर सकते हैं, which is provided by this not-for-profit organizations, and the organization is taking up these initiatives because again it's a not-for-profit organizations. That means the trustees and the owners of this organization are not getting anything out. They're not getting returns. उनको profits and dividends इस business से नहीं मिल रहे. Question: why are they doing this? They're just doing this so that the investors can benefit from it, so that the investors take advantage of the information that is provided by EI, RIS with respect to the social initiatives, with respect to the environmental initiatives, and with respect to the governance or good governance practices that the company is doing. And in addition to this, ना सिर्फ इस information से आपके investors benefit करेंगे, but the wider world is also going to benefit, because when I'm going to read about companies which are being responsible and companies which are not being responsible, then automatically my consumer decisions will also be based here. I would try to buy goods and services from companies जो कि responsibly business करती हैं. The mission of this particular institute, or the mission of this particular organization, is to empower responsible investors with independent assessment of companies' environmental, social and governance performance, and advise them on integrating them with their investment decisions. So as I told you earlier as well, the purpose of this particular organization is simple. The purpose is basically that it is supposed to provide information with respect to the social performance, with respect to the environmental performance, and with respect to the governance performance of the companies to investors, so that they can make decisions जो कि responsible decisions हैं. EIRIS provides responsible investment services to more than 100 asset owners, asset managers, banks, stock brokers and governments around the world, as well as major index providers. So जब आप FTSE for Good की बात करते हैं या Dow Jones की बात करते हैं, EIRS is providing information to all these indexes, to all these stock exchanges, to asset owners, to asset managers, to banks, to stock brokers, so that you can see कि जी उनके जो वो entities हैं जो EIRIS से information ले रही हैं social, environmental और governance performance के बारे में, वो कितनी wide है. And again, this will basically show कि किस तरीके से corporate responsibility कितनी important concept हो गया, because when people are pension funds को invest करना है या corporate wealth को invest करना है, people today are so conscious of their society and their communities, they want to invest in companies जो कि corporate responsibility करती हैं. Now today corporate responsibility is basically providing companies with competitive advantage. पहले की बात होती थी product अच्छी है, advertising अच्छी है, promotion अच्छी है, price अच्छी होगी तो company को competitive advantage मिलेगी, या time to market reduce कर दें या आप entry time को reduce कर दें तो company को competitive advantage मिलेगी. आज today 2013 competitive advantage का एक बहुत important factor corporate responsibility है. Companies, organizations, entrepreneurs, businesses जो है enterprises जो है जो कि corporate responsible business कर रही हैं, जो कि responsible business कर रही हैं, they do have competitive advantage over companies which are not doing responsible business. EIRIS brings almost 30 years of experience of promoting responsible investment and helping global investors, consumers, charities and financial advisors to invest responsibly. Again, it's not only the company जो कि आपको सही किस्म की information दे रही है, but it is also providing information to all the entities so that they make responsible investment decisions. Again, cycle full circle आएगा जब इस किस्म की companies ESG के बारे में, environment, society and governance performance के बारे में information देंगी, सही information देंगी, तो आपके investors जो हैं वो responsible decisions करके आपकी उन्हीं companies में invest करेंगे जो कि responsible business करेंगे. जब आपकी investment उन companies में ज़्यादा होगी तो automatically stock prices उन companies की ज़्यादा आएगी, उन companies की productivity बेहतर होगी, उन companies की output बेहतर होगी और उन companies का morale बेहतर होगा. And that is how the
तो आप कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी साइकिल की बात करें, दैट इज हाउ इट टेक्स अ फुल साइकिल, बिकॉज दैट इज हाउ CR और कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी बेनिफिट्स द कंपनीज इन द लॉन्ग रन, कि ऑटोमेटिकली इट इज इंस्टीट्यूशंस लाइक दिस और द प्रीवियस वन दैट वी स्टडीड जिनकी वजह से आपकी कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबल कंपनीज में इन्वेस्टमेंट आती है, जहां पर आप प्रमोट करते हैं इन्वेस्टमेंट इन सच कंपनीज जो कि environmentally responsible companies hai. Now the research at EIRIS is client driven and designed to allow investors to compare companies' performances. The company researched a range of environmental, social and governance issues and specific ethical concerns such as involvement in arms or tobacco. Investors are increasingly factoring ESG performance analysis into their investment decisions. So basically company जो है जिस किस्म की वो research करिए, that's client driven. It's handling those issues, it is handling those topics जहाँ पर जो उन topics को highlight करती है जो कि clients को चाहिए हैं. So it's basically आपके environmental, social और governance performance को तो highlight करती है, plus it is also tackling issues such as involvement of companies in arms and tobacco. So automatically अगर आपकी company arms and tobacco में इन्वॉल्व है या लेट्स से चाइल्ड लेबर में इन्वॉल्व है तो उसकी रेटिंग ऑलरेडी वैसे ही सफर करेगी, एंड देन मे बी द रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टर वुड नॉट लाइक टू इन्वेस्ट इन अ कंपनी जो कि आर्म्स में डील कर रहा है या जो कि टोबैको में डील कर रहा है या जो कि आपके इस किस्म के चाइल्ड लेबर के इश्यूज में डील कर रहा है. एज अ रिजल्ट ऑफ दिस इट हैज बिकम इंक्रीजिंगली इम्पोर्टेंट फॉर कंपनीज टू एंगेज विद दीज इश्यूज एंड टू रिपोर्ट ऑन दैट एंगेजमेंट. Completing the survey of EIRIS gives companies an opportunity to provide the most up-to-date and accurate information on their ESG performance to more than 100 investment institutions. Now you need to realize that it is one thing कि company responsible business कर रही है and nobody knows about it. Now अगर ये scenario है, then what will happen is that if a company, if an organization is doing responsible business and that is not being promoted, then that means किसी को पता नहीं चलेगा, आपके स्टेक होल्डर्स को पता नहीं चलेगा और कंपनी को बेनिफिट नहीं होगा. एंड इस कंपनीज लाइक EIRIS के आप अपनी रिस्पॉन्सिबल बिजनेस को या कंपनीज अपने रिस्पॉन्सिबल बिजनेस को रिपोर्ट कर सकती हैं और आप अपने स्टेक होल्डर्स को अपने साथ इंगेज कर सकते हैं, whereby you're telling them कि जी दिस इज व्हाट वी आर डूइंग, एंड आप सिर्फ अपने स्टेक होल्डर्स को इंगेज नहीं कर रहे, एक्चुअली आप अपने पोटेंशियल स्टेक होल्डर्स को भी इंगेज करें, बिकॉज व्हेन द रिस्पॉन्सिबल बिजनेस इंफॉर्मेशन इज publicized and it comes on the internet, तो automatically ऐसे लोग जो कि responsible investment करना चाहते हैं वो भी आपकी information को पढ़ेंगे, आपकी information को देखेंगे और automatically आपकी information को देखते हुए आपकी business में invest करेंगे and automatically उसका आगे जाकर भी बहुत फायदा होगा. Now EIRIS is a global market leader and their research is used by a variety of asset owners and asset managers. I've already told you that before कि जी आपके asset owners जो होते हैं जो कि invest करना चाहते हैं और asset managers जो कि दूसरों के assets को invest करते हैं और manage करते हैं, investment banks and charities throughout the world. So the research that is done by EIRIS is being used by all these entities and all these groups. Over 60% of the UK's responsible investment funds are managed by our clients. A not-for-profit organization, EIRIS does not assess companies' financial status but looks at their ESG policies in practice. Again, EIRIS research is not based on or is not about the financial status of a company. Company के assets क्या हैं, liabilities क्या हैं, owners equity क्या है, income कितनी हुई, revenues कितने थे, expenses कितने थे, how much cash came into the business and how much cash went out of the business. EIRIS is not involved in this. It's not taking these matters up. Financial matters या financial status को discuss नहीं करती या research नहीं करती. All that EIRIS is doing is it looks at the environmental impacts or the environmental performance of the company, the social performance of the company and the governance performance of the company and sees कि जी इन तीनों areas में company की policies क्या हैं और practices क्या हैं, gaps क्या हैं
और क्या काम बिजनेस को करना चाहिए. The company does not give overall company's ranking but provide assessment on over 150 individual criteria. So again, company का काम company को rank करना नहीं है कि जी what are the top 500 companies with respect to ESG. The company is not ranking companies, but company जो है based on 150 individual criteria companies की assessment करती है. So EIRIS का काम कंपनी की रैंकिंग करना नहीं है कि जी where is it in the top 500 companies. The purpose of EIRIS is कि by using almost 150 individual criteria, EIRIS basically sees कि इन criterias में, इन assessments में एक organization कहाँ stand करती है, उसकी rating क्या है. So that is what EIRIS is. Again, I would really like कि आप इस website is very easily available. आप just सिर्फ Google के tool bar पर जाएंगे, search bar पर जाएंगे, and you're going to write EIRIS, and you will have all the information that you require about the organization. Again, please explore it. Please see how it is. Maybe if I have time at the end of this chapter, जब मैं chapter खत्म करूँगी, if I have time, I will take you to the website myself, and we can have a look at it together. The next organization or the next agency that we're going to talk about is SIRI, Sustainable Investment Research International. And again, this is one of the organizations जो कि sustainability के बारे में, environment के बारे में, society, social performance के बारे में या सोशली रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टमेंट के बारे में काम करती है, इस एरिया में काम करती है. सोशली रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टमेंट SRI इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इन्वेस्टमेंट ट्रेंड्स. इन्वेस्टमेंट सब करते हैं. नाउ लेट्स से मे बी 10 years from now, 10 years back, people used to invest seeing कि जी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, कंपनी रेवेन्यूज कितना कर रही है, कंपनी के प्रॉफिट्स कितने हैं, कंपनी ने हिस्टोरिकली अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड्स कितने दिए. However, this particular investment trend has changed now. Today, when asset managers and asset owners and bankers and organizations want to spend their money or want to invest their money, they want to make a socially responsible investment. Now, socially responsible investment का ये मतलब नहीं है कि आप अपना पैसा let's say मस्जिद बनाने के लिए लगा दें, या आप अपना पैसा एक स्कूल खोल दें so that people can come to that school and study. Socially responsible investment basically is कि आप उन companies में invest करें जिनकी ESG परफॉर्मेंस अच्छी हो, जिनकी एनवायरमेंटल इनिशिएटिव स्ट्रांग हो, जिनके सोशल इनिशिएटिव्स अच्छे हों, जिनकी गवर्नेंस सही हो, जो कि एम्प्लॉय सोसाइटी कम्युनिटीज एनवायरमेंट का ख्याल रखें. यू वांट टू इन्वेस्ट इन सच कंपनीज. एंड अगेन मे बी ये आज इसलिए भी ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज that makes a company different. Now there's so many companies available in which an investor can invest, and most of them are more or less like. Now जब बहुत सारी companies एक जैसा काम करेंगे तो मेरे लिए differentiating अब पैसा तो मैंने invest करना, मैं A में करूँ, B में करूँ, C में करूँ, D में करूँ, then I would want to look कि जी अच्छा और क्या है इनमें, and that is where your ESG performance is going to help. That is where your corporate responsible initiatives are going to help, or that is where the concept of responsible business is going to give advantages to companies. जब सब companies same होंगे then I'll see कि अच्छा कौन सा ज़्यादा responsible business है, and whichever business is more responsible, automatically मैं उनको ज़्यादा उनके साथ ज़्यादा काम करूँगी या उनमें इन्वेस्ट करना चाहूँगी. Now this process has been driven by increasing concerns over the environmental and social impacts of companies which have raised consumer awareness and fueled high-profile NGOs campaigns. So the social responsible investment का concept है, which is the new trend these days, is about, or it was basically driven by उसकी promotion या promulgation क्यों है, because of the increasing concerns over the environment and social impacts of companies. Again वही वाली बात जो हमने शुरू की concepts में, CSR के concepts में पढ़ी कि इस किस्म के initiatives क्यों है, because more and more the society feels that companies are responsible for the environment, companies are responsible for the society. Why? Because the company owes it to them. Companies की debt है towards the society and the environment. आप जिस चीज़ से resources ले रहे हो, जिस चीज़ से पैसा ले रहे हो, जिस जगह से human capital ले रहे हो, it becomes your moral obligation to give back to the society, to give back to the community, to give back to the environment. So that is why
आपकी increasing concerns थी over environmental and social impact of a company's activity, and it was because of this increased concern कि आपकी social responsible investment जैसे concepts जो थे वो arise हुए. At the same time, there has been a growing understanding of the potential benefits for investment returns of companies adopting higher corporate social responsibility standards. Again, ये वाली बात भी हम पहले कर चुके कि it is not about what the business is returning back to the environment or the society or the community. The business is also benefiting from that. It has been proven by research, we have seen it कि जी जो companies high social standards को follow करती हैं, जो companies सही sustainability reporting करती हैं, जो companies responsible business करती हैं, या जो companies corporate responsibility initiatives take up करती हैं, उनको ज़्यादा benefits मिलते हैं as compared to those companies जो कि ये सारे काम नहीं करती हैं. So that is what I mean when I say at the same time there has been a growing understanding of the potential benefits for investment returns of companies adopting higher corporate social responsibility standards as a way of both managing risk and identifying ways to enhance future performance. So again, आप जब रिस्पॉन्सिबल बिजनेस प्रैक्टिसेस आपकी कंपनीज करती हैं, सो उनकी रिस्क मैनेजमेंट भी अच्छी हो जाती है, बिकॉज आपकी प्रोबेबिलिटी के जी आपसे गलतियां होंगी वो भी ख़त्म हो जाती हैं, एंड ऑटोमेटिकली आपकी जो फ्यूचर परफॉर्मेंस है दैट इम्प्रूव्स एज वेल एंड दैट ऑल्सो enhances as well. Now, with increasing pressures on both companies and investors to demonstrate that their activities are sustainable, many markets now have regulations requiring disclosures and consideration of social, ethical or environmental issues by investors. So again, बात के जी क्यों आपको ESG परफॉर्मेंस के बारे में क्यों ख्याल आया, या आप जब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, सोशली रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, ये क्यों है? जस्ट बिकॉज कि आपकी कंपनीज पर भी प्रेशर है और आपके इन्वेस्टर्स पर भी प्रेशर है कि वो ऐसे काम करें, ऐसे एक्टिविटीज करें, ऐसे ऑपरेशंस करें जो कि रिस्पॉन्सिबल बिजनेस के डोमेन में आते हैं. एंड नाउ देयर आर, और अगेन वो प्रेशर्स आपको कहाँ से होता है? गवर्नमेंट्स भी प्रेशर्स डाल रही है, आपके स्टेक होल्डर्स भी प्रेशर्स डाल रहे हैं, आपकी कम्युनिटीज और सोसाइटीज भी प्रेशर्स डाल रहे हैं कि डिस्क्लोजर्स भी अच्छे होने चाहिए, सही डिस्क्लोजर्स होने चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, एंड कंसिडरेशन फॉर सोशल, एथिकल और एनवायरमेंटल इशूज भी होनी चाहिए बाय कॉरपोरेशंस. एंड ओनली देन कॉरपोरेशन का काम ये होता है कि इन सब इशूज को डील करे और सही तरीके से रिस्पॉन्सिबली बिजनेस करे. इन्वेस्टर्स का काम अपने एंड पर ये है कि जी वो ऐसे socially responsible investment करें so that they would invest in companies which are doing responsible business. Government का भी काम है कि वो ऐसी regulations बनाए which is sort of positively pressurizes the companies कि वो socially या वो corporate responsibility initiatives take up करें. The growth in socially responsible investment represents a recognition that traditional financial analysis and investment techniques do not capture the full range of factors of concern to investors and which increasingly affect companies' performance. So, when we talk about SRI and when we talk about socially responsible investment, it basically shows कि अगर कंपनी सिर्फ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करेंगी और सिर्फ अपनी इन्वेस्टमेंट टेक्निक्स को, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट टेक्निक्स के बारे में इंफॉर्मेशन देंगी, सो दैट इंफॉर्मेशन इज नॉट इनफ फॉर इन्वेस्टर्स. नाउ अगेन you have to look at the history of it. Today you and I are more aware. हमारी awareness ज़्यादा है, हमारी education ज़्यादा है, हमारी knowledge ज़्यादा है. We do realize that when a tree is cut, it's going to take another 100 years for us to plant another tree और वो उतनी height पर पहुँच जाए. We do realize कि अगर tree cut होगी तो उससे आपकी soil degradation कितनी होगी या उससे आपकी ozone layers कितनी ख़राब होगी. We do realize कि greenhouse effects की हम बात करते हैं तो उसका environment पर क्या negative impact आता है. We do realize कि अगर हम चाइल्ड लेबर जैसे इश्यूज की बात करते हैं तो वो आपकी सोसाइटी को कैसे एडवर्सली अफेक्ट करती है. अगर हम फीमेल फीसाइड्स की बात करते हैं तो उससे आपकी कम्युनिटीज को क्या फर्क पड़ता है. अगर आप विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, विमेन को एम्पावर नहीं करते तो उससे आपकी कम्युनिटीज एंड हाउस होल्ड्स कैसे अफेक्ट करते हैं. नाउ सिंस यू एंड आई are aware of our surroundings, since you and me are we know कि जी हमारे actions या companies के actions हमारी environment को again जिसमें हम रहते हैं, जिसमें हम survive करते हैं, उस पर क्या impact कर सकते हैं. Then we also realize अगर
कंपनीज के सेल्फिश एटीट्यूड की वजह से अगर सोसाइटीज और कम्युनिटीज खराब हो जाएं तो फिर क्या होगा? इफ देयर इज गोइंग टू बी नो सोसाइटी एंड नो कम्युनिटी, तो क्या कंपनी सर्वाइव कर सकेंगी? नहीं कर सकेंगी. इफ देयर इज जस्ट अ स्मॉल एग्जांपल इन दिस केस कैन बी के कराची में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब होती है बिकॉज ऑफ फैक्टर्स जो कि बिजनेस ओरिएंटेड नहीं है, बिकॉज ऑफ फैक्टर्स जो कि बिजनेस के कंट्रोल में नहीं है. क्या उस deteriorating law and order situation, does it affect the business? Yes, directly. So again, the point is that since the activities of the society affects a business positively and negatively, automatically for its own interest the business should also look after the society. Again, cycle complete hoga. The society is going to look after the business is going to look after the society, and both of them have to give and take and see कि किस तरीके से काम होता है. So you and I, me and you as responsible investors also realize the fact कि जी अकेले कुछ नहीं बनेंगे. Every one of us has to integrate and every one of us has to sort of work together and see how things are. So मेरे लिए अब financial information, सिर्फ financial information या सिर्फ investment information enough नहीं है. In addition to revenues and expenses and assets and liabilities and profitability, I need to know कि मेरी कंपनी में या उस कंपनी में जिसमें मैंने इन्वेस्ट करना है उसकी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस क्या है, उसके इकोनॉमिक इनिशिएटिव्स क्या हैं, उसके सोशल इनिशिएटिव्स और सोशल परफॉर्मेंस क्या है, उसके एनवायरमेंटल एक्टिविटीज़ क्या हैं या उसकी एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस कैसी है, एंड देन ओवरऑल उसकी गवर्नेंस परफॉर्मेंस कैसी है. हर चीज़ को जिसमें एनवायरमेंट भी आएगी, सोसाइटी भी आएगी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आएगी, कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आएगी, फंक्शनल एरियाज में आएंगे. इन सब चीज़ों को ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कैसे मैनेज कर रही है, इन सब चीज़ों को ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कैसे देख रही है. सो दैट इज़ वाई द ग्रोथ इन SRI represents a recognition that traditional financial analysis and investment techniques do not capture the full range of factors of concern to investors and which increasingly affect a company performance. So company performance today in the year 2013 is not about the financial performance only. It is not about the investment decisions only. The company performance is going to have the financial performance plus the social performance plus the environmental performance and plus the governance performance as well. And all these four performances are going to combined, they're going to add up and make up the company's performance. इस केस में अगर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अच्छी हो और बाकी तीनों परफॉर्मेंस अच्छी ना हो तब भी कंपनी नहीं चलेगी. अगर बाकी तीनों अच्छी हो और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अच्छी ना हो, दैट्स गोइंग टू एडवर्सली अफेक्ट द कंपनी. अगर फाइनेंशियल अच्छी है और सोशल अच्छी है लेकिन एनवायरमेंटल और गवर्नेंस नहीं है अच्छी, दैट इज ऑल्सो गोइंग टू हैव अ negative impact on the company as well. Now, the agenda of SRI issues is constantly changing as the market develops and as our understanding of how to achieve sustainability evolves. Again, जिस तरह के हमने कहा कि corporate social responsibility की definition भी redefine होती है, बिल्कुल उसी तरीके से आपके over the years the agenda for socially responsible investment is also continuously changing because the market trends are changing, the market needs are changing, and our understanding of what is socially responsible investment and our understanding of what are the things which are important with respect to social, economic, social, environmental and governance performance are also changing. For example, the concept of stakeholders accountability and engagement has quickly become a key theme for socially responsible investors. Now, just giving you an example कि जी अब आज के दिनों में आपका जो स्टेक होल्डर्स अकाउंटेबिलिटी है कि जो हम स्टेक होल्डर्स की बात करते हैं उनमें भी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, उनके भी एक्शंस में अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए. दैट हैज़ बिकम वन ऑफ द की एरियाज जो कि आपकी सोशली रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टर्स जो हैं जिसको देखते हैं while they are investing. Equally, the types of performance metrics that can be used to report on corporate social performance are undergoing rapid development. The SIRI group's unique business model, global reach and wealth of specialist experience enables them to track markets development globally and identify socially responsible investment issues to create innovation solutions for our client. So again, जब आप SIRI की बात करते हैं, it is using the socially responsible investment concept, and while it's using it, the organization in itself is not stagnant. वो एक status को maintain नहीं करी. It realizes कि जो issues ने take up किया है SRI का, that's a very changing issue. उसमें बहुत सारी changes आती हैं. Changes क्यों आएंगी? Because जो आपके socially responsible investor है उसकी needs and wants change होंगी. अगर आज socially responsible investor सिर्फ environment के बारे में सोच रहा था तो अब कल को वो social environment और governance के बारे में
में सोचेगा और परसों द इन्वेस्टर इज ऑल्सो गोइंग टू थिंक अबाउट मेकिंग द स्टेक होल्डर्स अकाउंटेबल फॉर देयर एक्शंस एज वेल. सो सिंस द socially responsible investor is evolving with time, he or she is getting more information, he wants more accountability and more transparency with respect to the company's performance. So automatically जो आपके SRI issues हैं वो भी continuously change होते हैं, evolve होते हैं और अपडेट होते रहते हैं. एंड देन अगेन आपका जो ग्रुप है उसकी भी ट्रांसपेरेंसी और क्रेडिबिलिटी ऐसे ही बनती है बिकॉज उनका बिजनेस मॉडल इवॉल्विंग है, उनका बिजनेस मॉडल फ्लेक्सिबल है, दे आर रीचिंग टू अ लार्ज नंबर ऑफ स्टेक होल्डर्स, उनकी जो ग्लोबल रीच है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत सारी जगहों से उनकी इनपुट आती है, बहुत सारी जगहों से उनकी फीडबैक आती है. एंड मोर इम्पॉर्टेंटली जो उनके एक्सपर्ट्स हैं, जो एक्सपर्ट्स की क्वालिफिकेशन और नॉलेज बेस है, दैट प्लेज अ वेरी वेरी important role because it is the specialists who are working on behalf of SIRI and they are the ones जो के market developments, global market developments को study करते हैं and they are the ones जो के socially responsible investment issues को देखते हैं कि कितनी कंपनी की क्या social environmental और governance performance क्या है और उसके बेस पर कैसे काम हो सकता है. नाउ अगेन हमने ये तो बात कर ली कि जो SIRI इंस्टीट्यूट है या ऑर्गेनाइजेशन है वो बेसिकली सोशली रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टमेंट को देखती है. नाउ लेट्स जस्ट स्टडी कि जी आपकी SIRI के अंदर क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व है. द SIRI ग्रुप हैज़ पायनियर्ड द पब्लिकेशन ऑफ डिटेल्ड हार्मोनाइज्ड प्रोफाइल्स ऑफ द लार्जेस्ट ग्लोबल कॉरपोरेशंस. दैट इज़ व्हाट SRI डज कि जी आपकी हार्मोनाइजिंग ऑफ profiles of companies. These SIRI's global profiles are researched according to consistent criteria and in a standardized format using a stakeholders based model. So stakeholders model को जहन में रखकर एक consistent criteria के साथ आप organizations की profiles को research करते हैं. Again इसमें सबसे ज़्यादा important चीज़ क्या है? Standardization and consistent criteria, because when there's standardization and when there's consistent criteria and you're using the same criteria and the same standards to research a company profile from one year to the second to the third, तो automatically आपको comparison में आसानी होती है, आपको performance tracking में आसानी होती है, आपको benchmarking में आसानी होती है, and you get so many other benefits. So that's why this is important. Each profile contains over 350 data points and associated analysis, providing unrivaled detail and breadth of comment. All major stakeholder issues are covered, including community involvement, environmental impact, employment relations, customer policies, human rights issues, and corporate governance. So 350 data points के अंदर रहते हुए को यूज करते हुए SRI जो है वो कंपनी प्रोफाइल्स को रिसर्च करता है एंड देन इट इज कवरिंग ऑल दीज एरियाज फ्रॉम कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट टू कॉर्पोरेट गवर्नेंस, फ्रॉम कस्टमर पॉलिसी टू ह्यूमन राइट्स इश्यूज. फॉर ईच इशू CIRI describes and analyzes the company's policies, management systems, reporting standards and impacts together with particular strengths and weaknesses. So for each area that is mentioned here, the SRI their specialist research के इन सारे एरियाज में कंपनी की पॉलिसीज क्या हैं, कंपनी की मैनेजमेंट सिस्टम्स क्या हैं, उनके रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स क्या हैं, कंपनी और अगेन कंपनी की इन एक्टिविटीज का विद रेफरेंस टू ऑल दीज इनका क्या इम्पैक्ट है, कंपनी की क्या स्ट्रेंथ्स और क्या वीकनेसेस हैं. I guess what I'm going to do right now is we're going to take a break, just a 1 minute break before I do a recap. So let's just take a deep breath in and exhale, and we're just going to end our lecture here. And we're almost nearing the end of chapter number 6. So again, we just need to be a little patient here. Let's just have a quick recap of this particular chapter. What we're doing in this chapter is we're basically discussing who are the various organizations and which are the various agencies जो कि corporate responsibility reporting में help out करती हैं, जो कि businesses के बारे में research करती हैं, corporations को analyze करती हैं और फिर उनके corporate responsibility initiatives को करती हैं. इसमें हमने एक जो पढ़ा वो EIRIS था एंड वी सेड कि जी उसका भी डिस्कस कि वो क्या काम करते हैं, कैसे काम करते हैं, कैसे हेल्प आउट करते हैं. और उससे पहले हमने CR इंडेक्स की बात की जो कि BITC बिजनेस इन द कम्युनिटी वाले जनरेट करते थे, हमने उसके पूरे सिस्टम को देखा. एंड फाइनली
हमने जो लास्ट चीज़ की वो हमने सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट रिसर्च इंटरनेशनल विच इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन, हमने उसको स्टडी किया और हमने SIRI के रेफरेंस से सोशली रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टमेंट की बात की, एंड वी डिस्कस कि वाई इज़ इट इम्पोर्टेंट, वाई शुड कंपनीज डू इट, और कंपनीज को क्या बेनिफिट मिलता है, एंड अगेन हमने सोशली रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टर की भी बात की और सोशली रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टमेंट की भी बात की कि जी दोनों क्यों ज़रूरी है, और स्पेशली आज के इन टुडेज कम्पिटिटिव वर्ल्ड वाई आर दे इम्पोर्टेंट एंड वाई are they needed. So that is what we did. I told you again that मैंने आपको EIRIAS की वेबसाइट पर लेकर नहीं गए, but hopefully when I start my next lecture, that's the first thing that I'm going to do. I'm going to take you to the EIRIAS website and we can have a look at it together. But again, please, I'm reiterating myself, and I know that I'm repeating myself. You need to go to these or to all these websites yourself. Please, आप उनके सारे जो आगे links हैं आप उनको research कीजिए, so that you know कि क्या है. Case studies तो बहुत ही important है पढ़ना. Maybe your assignments in the future will be with reference to those case studies. Maybe I'll ask you to evaluate a particular website and tell me कि जी वो क्या काम कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, summarize the activities of that particular website. The last thing that I want to tell you and I would want it to go by you is that the information that I'm giving you now, especially in this particular chapter, might not be completely available in your books. I would send you handouts for all that I've shown you, but अगर आपको handouts में या books में information available ना मिले तो please don't panic and please don't worry, because all that you need to do is go to the respective websites and सारी information जो कि आपकी slides में है और जो कि आपकी books में नहीं होगी वो सारी website पर available होगी. So with this thought, I'm going to say my Allah Hafiz. So till next time, you take care of yourself.